So hi guys, welcome to the second class for averages, and in this class we'll be talking about weighted average and mixtures who are also related to some extent to the weighted average concept, right? So weighted average. Weighted average. Now, what do you mean by the term weighted average? So basically when we were doing averages, right? So either there was one class, let's say one batsman whose scores are we accounting, or one player jiske number of goals in every match we are counting. So it was based on an individual thing or a single set of things, right? When we talk about weighted average, it's two or more individuals or groups that we are talking about. Right? So in weighted average, we are talking about the average of two or more individuals or groups together. For example, समझने की कोशिश करते हैं. Let's say it says that Sachin scored, let's say 25, 30 and 40 runs in 3 innings. Right? MSD scored, let's say 27, 41 and let's say 33 runs in 3 matches. Right? Now we have to calculate the weighted average. So abhi tak either we were calculating Sachin ka average or we were calculating MSD ka average. When we talk about weighted average, then there are two or more individuals jinka average we'll be calculating. Right? So what do we have as the formula for weighted average? The formula will be total sum divided by total observations. This simply means what? Total sum divided by total observations can simply be written as Sachin's total plus MSD ka total, right? Divided by Sachin innings plus MSD innings, right? So this is what we'll be doing. अब कैलकुलेट करते हैं तो सचिन का टोटल कितना है बॉस 40 30 70 70 25 95. MSD का टोटल इज व्हाट 40 20 60 60 30 90 90 and let's make it 32. So 40 20 70 70 and 30 60 60 30 90 90 plus 10 100, right? And the total number of innings that they both have played together is 3 plus 3 6. So my total becomes 195 divided by 6, or this would simply mean how much? 31 32 32.5, right? So the average between the two of them is nothing but 32.5, right? And that is what the concept of weighted average is, right? For example, let's say it will tell you that in class 1 the average of class 1 is, let's say, 57 kgs, and average of class 2, the average over here is, let's say, 63 kgs, right? There are 20 students in class 1 and there are, let's say, 25 students in class 2, right? So my weighted average would be calculated as the total of class 1. Total is given by what? See, average is equal to sum divided by number of observations. So if average is given and number of observations is given, they can be multiplied. So average multiplied with number gives you the sum of observations. Always remember that. A lot of students I see get confused in this. So average ko if you multiply with the total number of observations, you get the sum. So the sum for class 1 would be what? 57 multiplied by 20, that is 1140. And average of class 2 would be what? 63 multiplied by 25. So 63 multiplied by 2 is 126. 126 and 30, 156. 157.5, I believe. So it will be 1575, I believe, right? Because it will be 31.5. Yeah. So this is what you have. And the total number of students together are 45. So my total will be what? 5, 7, 4, 11, carry over 1, 5, 1, 6, 1, 7 and 1, 1, 2 divided by 45. Right? Let's take them into 3. So this will go how many times? 905. And this will go how many times? This will go 15 times. Right? Does 905 go in 15? No. But how many times will it go? 900 will go 60 times and 5 will go
0.33 times. So the average that we get for both the classes is 60.33. So over here you see that we are talking about two individuals or two groups, so maybe more. Maybe more also is possible, right? But the basic sense ka formula remains the same, that we have to do total sum divided by total number of observation. That is something on the very basic, and that is something we'll have to do, right? कुछ और examples try करते हैं. Let's say that class 1 का height is, let's say, 95 centimeters, and there are 25 students. Class 2 का height is, let's say, 117 centimeters. Total number of students is 30. Right? And let's say there is a class 3. Class 3 ka height is, let's say, 125 centimeters, and number of students are 20. Right? So my weighted average would be calculated how? My weighted average would be calculated how? Total sum, that is 95 multiplied by 25, class 1 ka sum. Class 2 ka sum, that is 117 multiplied by 30, and class 3 ka sum, that is 125 multiplied by 20. Divided by the total number of observations, that is 30, 20, 50, 50 and 25, 75. What do we have over here? 95 into 25. So 9525 is what you have. 5, 5, 25, carry over 2. 5, 9, 45, 5, 2, 10, 55, 2, 57, carry over 5, 9 to 18, 5, 23. So we have a 2, 3, 7, 5. 117 into 3. 117 into 3 is 351, so 3150. And 125 into 2 is 2500. Divided by 75 is what you have to do. Now the summation over here is what? 2000, 3000, 5000, 5000, 2000, 7000. 7500, 7500 के बाद 100, that is 7600. 7600 के बाद 300, 7900. 7900 के बाद 70 and 50, 120. So 7900 plus 7900 plus 120, 8020. 8020 and 8025 divided by 75 is what you are required to. Correct? It will go how many times? 75 will go one time. You're left with a 52. You will take a 0. You will take 5 down. So you have a 525. 525 will go how many times? So 75 into 2 is 150, into 4 is 300, into 6 is 450. So 6 times 450 is gone. You are left with a, this was what? 525. 107 it will go. No. Yeah, 107. So the average of the class of all the 3 classes, or let's say there were 3 classes in a school, the average turns out to be equal to 107. Right? So this is how your weighted average works, exactly in the similar manner. Exactly in the similar manner. The only thing you will have to remember is, or open up your minds to be, average multiplied by number of observations gives you the sum ka value. The summation is given by average multiplied by number of observations. Right? Let's solve two more questions to understand a few very small things, but very important things. So let's say that class 1 ka weight we are talking about. I'm going to take very simple values because I just want to help you understand one thing. So let's say कि जो है class 1 का weight is 30 kg with 30 kgs is the average weight. Class 2 का average weight is 40 kgs. Number of students का ratio is, let's say, 2:3, right? And there is another question in which class 1 has 30 students and class 2 has 40 students, and the average ratio is, average ka ratio is 2:3, right? Try and solve it first, right? आप पहले pause करो, solve करो, and then only move ahead. So while we are talking about this, we can say that class 1 has 2x students, class 2 has 3x students.
right? So as per the formula that we have, total sum divided by observations would be what? 30 multiplied by 2x plus 40 multiplied by 3x divided by number of students, that is 2x plus 3x, 5x. What do you get from here? 330 into 2, 60x plus 120x divided by 5x. Or what do you get? 180x divided by 5x. X gets cancelled. You are left with the average of 36. Right? But over here, try it over here. Try the same thing over here. This will be, so let's say the average of class 1 is 2x and the average of class 2 is 3x. So this will be over here 30 multiplied by 2x plus 40 multiplied by 3x. Correct? Divided by number of students, that is 70. Correct? What do you get over here? 60x plus 120x, that is 180x divided by 70. Now, since the value of x is not known to me, the answer over here will be CBD, that simply means cannot be determined. So from here, there is one thing to understand, that when the number of observation is given in ratio format, you can still find the weighted average. But if the average is given in terms of ratio, you cannot find the average. And why is it happening? Because ऊपर में भी number of observation का use है, नीचे में भी use है, तो eventually x and x gets cancelled. But when average is in terms of x, तो ऊपर तो x आ गया, नीचे average का कोई use ही नहीं है, तो नीचे there is no x. So if there is no x, there is no possibility of cancelling out that x. So it's never possible. So we'll write this thing as well, कि if the number of observations are given in ratio, format, it is still possible to calculate the weighted average. It is still possible to calculate the weighted average. But if the average of individuals or groups is given in ratio format, weighted average cannot be calculated. So always remember that if you see that my average has been given as in terms of ratios or anything, remember the answer is always going to be cannot be determined. Why? And you know the reason. ऊपर और नीचे दोनों तरफ x should be there to cancel them out. अगर केवल ऊपर होगा, नीचे average का कोई काम ही नहीं, तो नीचे there is no x or the multiplying factor, right? तो अगर नीचे अवेलेबल ही नहीं है तो कैंसिल आउट आप किससे करोगे? एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कैंसिल आउट, दैट x could mean anything. It could be a multiple of 1, multiple of 2, multiple of 1 crore, multiple of 5 crores. It could be anything. You do not know. And depending upon the value of x, your average will depend. राइट भाई 180 डिवाइड बाय 70 भी x के साथ हो सकता है, 900 डिवाइडेड बाय 70 भी हो सकता है, एंड बोथ वैल्यूज आर गिविंग यू डिफरेंट आंसर्स. So because there is a x left out, so because whenever you find that average is given in ratio format, it's never possible to calculate the average of the groups or individuals, whatever you're calculating. It's never possible to calculate the weighted average, right? So the answer is always going to be cannot be determined. But if a number of observations has been given in ratio format, you can always calculate it, right? So this is about weighted average. अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट और आता है मिक्सचर्स को लेकर के, right? मिक्सचर्स को लेकर के, तो मिक्सचर इज व्हाट? Mixing of two different liquids of different quality together to get a new liquid, right? So whenever you take two different liquids and put them together in a jar, in a bowl, whatever you want to put them into, that term is known as mixing, and that is known as a mixture. Mixture of two different, two or more लिखना चाहिए कायदे से, two or more, right? So two or more.
अब इसमें भी सेम वेटेड एवरेज का ही कॉन्सेप्ट लगता है, एंड इट गोज इन दिस मैनर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वन multiplied by quantity of product 1 plus quality product 2, space is less, quantity product 2, right, divided by quantity product 1 plus quantity product 2. So what is this thing giving? Quality of product 1 into quantity of product 1 plus quality of product 2 into quantity of product 2 divided by quantity of product 1 plus quantity of product 2. What is it giving you? It is giving you the quality of mixture. It is giving you the quality of mixture. Right? For example, let's try and understand कि कैसे काम करता है. मान लेते हैं कि मिल्क सॉल्यूशन है आपके पास. You have milk. Right? Now there is product 1 जिसका आपके पास 10 लीटर्स मिल्क है, एंड इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 80%. 80% कॉन्सेंट्रेशन सिंपली मीन्स कि अब मान लेते हैं मिल्क वाटर मिक्सचर है, राइट, मिल्क वाटर मिक्सचर है. और पहले प्योर मिल्क से स्टार्ट करते हैं, आपको पहले मैं प्योर मिल्क पे समझाता हूं कि लेट्स से 10 लीटर्स मिल्क यू हैव, राइट, एंड प्रोडक्ट 2 इज 10 लीटर्स ऑफ वाटर, राइट, प्रोडक्ट 2 इज 10 लीटर्स ऑफ वाटर, राइट. अब क्योंकि आप मिल्क के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो, तो मिल्क के रिस्पेक्ट में इसका कॉन्सेंट्रेशन तो 100% है, राइट. मिल्क के केस में इसका कॉन्सेंट्रेशन तो 100% है. बट जब आप मिल्क के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो कि जैसे अब जब आप मिक्स करोगे, क्वालिटी ऑफ मिक्सचर का मतलब यहां पे क्या हुआ कि भाई जब आप मिक्स करोगे तो किसी एक के ही रिस्पेक्ट में आप बात करोगे. मान लो दूध और पानी मिलाया, मिल्क एंड वाटर मिलाया, तो या तो आप क्वालिटी ऑफ मिल्क की बात करोगे मिक्सचर के अंदर, या क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करोगे, राइट. तो अभी हम यहाँ पे मिल्क के क्वालिटी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिल्क के क्वालिटी के रिस्पेक्ट में, तो जो मेरा प्रोडक्ट 2 है दैट इज 10 लीटर्स ऑफ वाटर, तो इट सिंपली मींस क्या, इट्स अ 0% मिल्क सॉल्यूशन. इसमें तो 0% है ना मिल्क, राइट, एंड दिस इज 100% मिल्क सॉल्यूशन. अब इन दोनों को हमने मिक्स करा, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट 1 क्या हुआ, 100%, राइट. अब ये भी समझते हैं कैसे लिया जाता है. तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट 1 यहां पे आपका फ्रैक्शन वैल्यू लिया जाता है, राइट. सो योर फ्रैक्शन वैल्यू इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट 1 क्या है, 100%, दैट इज 1 entire. Quantity of product 1 that is 10 plus quality of product 2 that is 0, quantity of product 2 that is 10 divided by quantity of product 1 plus quantity of product 2. ये कितना हुआ, 10 plus 0 divided by 20, that is 10 divided by 20, that is 1 divided by 2, that is 50% concentration. और खुद सोचो ना, 10 लीटर आपने दूध लिया, 10 लीटर पानी लिया, दोनों मिला दिया, हमको पता है भैया 20 लीटर हो रहा है, 20 लीटर हो रहा है, हमको पता है. लेकिन उस 20 लीटर में 10 लीटर पानी है, 10 लीटर मिल्क है, तो मिल्क है कितना, इवेंचुअली 10 ही लीटर मिल्क है. तो 10 लीटर आउट ऑफ 20 लीटर इज मिल्क, इट्स सिंपली 50% कॉन्सेंट्रेशन, राइट. तो अभी समझ में आ रहा है कि इसको यूज किस तरह से करते हैं. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट 1 इंटू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट 1 प्लस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट 2 इंटू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट 2 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट 1 प्लस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट 2 एंड सो ऑन. और है तो सेम रिस्पेक्ट में वो चलता चला जाएगा, और इससे आपकी क्वालिटी ऑफ मिक्सचर निकलेगी जिसके भी रिस्पेक्ट में आप निकालना चाह रहे हैं, राइट. एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. लेट्स से देयर इज अ ओके, मैं एक अलग तरीके से आपको समझाता हूं. मान लेते हैं कि अल्कोहल है, राइट. अल्कोहल का आपके पास 15 लीटर्स है, ये प्योर अल्कोहल है, 100% प्योर अल्कोहल है, राइट. आपके पास मिल्क है, अटपटा सा मिक्सचर है, बट मिक्स कर देते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है. मिल्क आपके पास 25 लीटर्स है और ये भी 100% प्योर है, राइट. मिल्क भी आपके पास जो है 25 लीटर्स है, ये भी आपका 100% प्योर है, ठीक. तो अगर मेरे को निकालना हो व्हाट इज द क्वालिटी, और इट कुड ऑल्सो बी रिटन एज कॉन्सेंट्रेशन, क्वालिटी और कॉन्सेंट्रेशन सेम चीज होती है, ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर, राइट. तो क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट 1 अल्कोहल के रिस्पेक्ट में बात करें तो अल्कोहल का क्वालिटी क्या है, 100 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी.
मिल्क में अल्कोहल का क्वांटिटी क्वालिटी क्या है 0 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ 1 प्लस क्वांटिटी ऑफ 2. What do you get? 15 plus 0 divided by 40, or you get 15 divided by 40, right? That is 37.5%, right? That is 37.5%. But वहीं पे अगर मेरे को क्वालिटी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क निकालना होता, क्वालिटी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क निकालना होता, तो my alcohol would have been 0% concentration, right? Multiplied by 15 plus 100% मिल्क होता, multiplied by 25 divided by 15 plus 25. Correct? So you would have gotten 0 plus 25 divided by 40, that is equal to 25 by 40, that is nothing but 62.5%. या वो चीज यहां से भी निकल जाती है ऑब्वियसली. अब टोटल में से 37.5% अल्कोहल है और 62.5% मिल्क है, तो 37.5% अल्कोहल है, तो ऑब्वियसली बाकी का बचा मिल्क होगा. बट अंडरस्टैंडिंग किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उस प्रोडक्ट में, जिस लेट्स से जब हम अल्कोहल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे तो मिल्क में तो अल्कोहल 0 है भाई, क्योंकि मिल्क तो 100% प्योर है. तो उस केस में हम जो है मिल्क में जो क्वालिटी लेंगे वो 0 हो जाएगी, राइट? भले मिल्क 100% प्योर है, बट हम अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं. तो जब हम अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि मिल्क में कोई अल्कोहल नहीं, राइट? अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो, ठीक है? इफ नॉट, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. अब बोलते हैं कि लेट्स से मेरे पास अल्कोहल है 15 liters, but this is only 85% pure. 85% pure means 15% water है, राइट? 20 लीटर्स लेते हैं, इजी वैल्यूज रखते हैं. मेरे पास एक और अल्कोहल का मिक्सचर है जिसमें 30 लीटर्स अल्कोहल है, बट ये वाला केवल 70% प्योर है. दिस इज ओनली 70% प्योर, करेक्ट? दैट सिंपली मीन्स व्हाट, 30% इसमें वाटर है. अब मेरे को निकालना है कि जब इन दोनों को मिक्स किया तो अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, राइट? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन मिक्सचर क्या रहेगा, अब यहां पे समझो, राइट? तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वन कितना है 85%, दैट इज 17/20 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी दैट इज 20, प्लस सेकेंड का क्वालिटी क्या है 70% दैट इज 7/10 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ बोथ, समेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ बोथ. ये कितना हुआ बॉस, दिस इज गॉन, this is gone. What are you left with? 17 plus 21 divided by 50. What do you have? 38 divided by 50. 38 divided by 50 is nothing but 76%. और इसको समझने की कोशिश करो दूसरे तरीके से कि भाई 20 लीटर्स है, 85% प्योर है, मतलब 85% अल्कोहल है, मतलब कितना 17 अल्कोहल है, और यहाँ पे 30 में 70% है, दैट मीन्स 21 अल्कोहल है. तो जब दोनों मिक्स किया तो अल्कोहल कितना मिक्स हुआ, एक जगह से आया 17 लीटर, एक जगह से आया 21 लीटर, मिक्स हो गया, टोटल 38 लीटर हो गया. और टोटल मिक्सचर कितना था भाई, 20 और 30 था, तो 50 हो गया. तो 38/50 76%. एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए मिल्क पे. लेट्स से आपके पास मिल्क है 50 लीटर्स, बट दिस इज ओनली 75% प्योर. 75 नहीं लेते यार, इजी वैल्यू ही लेते हैं, 80% प्योर, राइट? और दूसरे पास आपके पास एक और मिल्क का सॉल्यूशन है जिसमें जो है आपका लेट्स से 75 लीटर्स है, और ये आपका जो है 60% प्योर है. तो जो आप मिक्स करोगे अपना दोनों मिल्क को, तो आपके पास मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा बॉस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क आपके पास कितना रहेगा. तो दिस विल बी क्वालिटी ऑफ फर्स्ट, दैट इज 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 50, क्वालिटी एंड क्वांटिटी का प्रोडक्ट, और यहां पे भी क्वालिटी एंड क्वांटिटी का प्रोडक्ट, दैट इज 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइडेड बाय 50 plus 75 125. What do you get? This goes off 10 times, so this goes 40. This goes off 15 times, 15 3 45 divided by 125, that is 85 divided by 125.
राइट। 85 डिवाइडेड बाय 125, हाउ मच परसेंटेज इज इट, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, ये गया 4 टाइम, ये गया 5 टाइम, ये गया आपका 17 टाइम, 17 4 जा 68%। तो अब समझ में आया, मिक्सचर में जो है वेटेड एवरेज ही है, एक अलग तरीके से काम करता है। कॉन्सेंट्रेशन जिसका निकालना हो उसकी क्वालिटी की बात होती है, क्वांटिटी तो पूरी पूरी ली जाती है।